say first that I've just shifted to Bangalore, so I'm trying to learn so few words and alphabets. I've started learning. So next time when we meet, definitely we have a kind of little bit communication in Kannada. And first of all, I would like to say thank you to all to come over here under short notice. And from the Bank of Baroda side, we are actually appreciating your efforts and taking out your valuable time to join us and understand what we all are about the MSME. So before giving you about what Bank of Baroda is, I just want to kind of share my experience with you and what all MSME is all about, what government is, why government is more focused on this. सबसे पहले ये है कि MSME is backbone of any economy, be it India or foreign countries. What we contribute to our GDP, which is called gross domestic product. Basis on this, any economy, any geographical economy is being measured that how kind of economic of any country is growing. So MSME is said to be a backbone of any industry, because if it is there are large industries surrounding us or in India at a different geographical level, but only they can get support from MSME only. Then they can kind of growth in their business. So this is part one. So if you talk about what is our contribution as a MSME to economy, currently India is contributing around 30% of total GDP, gross domestic product. So if we talk about that, our economy is say 100, so 29 to 30% is contributed by MSME. If we compare ourselves with developed countries like China, Europe, America, where the contribution is 50% plus, so you can understand that why MSME is important, why government is more focused, be it central government, state government. You will see that there are different schemes always coming out for different sector for kind of encourage the MSME. Coming out of total, if you see that in India around 6.5 crore MSME active in India. Those are into manufacturing sector, trading sector, as well as service sector. So, and if we talk about how much percentage bigger like metros, semi-metros, urban or rural. So 49% of total total MSME, that 6.4 crores which I am talking about. So 49% is contributed by rural and semi-urban only. And why we feel that, why we are interacting with at the taluka level or small level or a small industrial units, so that our reach can be to all MSME small segments, that is micro and small finance. In taluka and small cities, mostly if you talk about total 6.4 crore of MSMEs there in India, out of which 99% of business is run by micro and small. So हम ये समझ सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन एक माइक्रो यूनिट्स दे सकती है. एंड व्हाई इफ यू सी दैट सराउंडिंग यू देयर आर सो मेनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर देयर, करेक्ट, जो आपको जरूरत होगी तो किसी को 50,000, किसी को लाख रुपया, जैसे जैसी जिसकी जरूरत है बेसिस ऑन नेसेसिटी दे आर गिविंग टू यू. So because of that, from last 8 years, 7-8 years, we talk about micro industries, that microfinance units or banking or NBFC are growing like anything. And considering that only, we understand the need of micro and small units as a Bank of Baroda. Our legacy is 118 years. So and if you talk about, we are across the India, we have more than 8,000 branches, and we are represented in Bangalore zone. Bangalore zone itself, we have more than 290 branches, and major branches are in rural areas only.
So you can see that the bank focus is more towards the rural and semi-urban areas where we want to cater small or medium enterprises, small and micro enterprises in our kitty. Because of that only, the purpose of coming here to interact with you. Now I'll go for a kind of products which we are dealing in. Almost there are multiple products which suits different kind of industries, maybe trading ho, manufacturing ho, या service sector. So we have different schemes are there. So major, what we are going to discuss the major schemes which Bank of Baroda is doing it, and if you and your relatives, maybe your in association if you are connected with, so you can talk to them, you can kind of spread to them that banks are there who can help you out basis on this. These products are there, you can basis on that, you can connect to nearest your branch and they can help you out to grow your business. Because if you grow, along with you, we can also grow. We are from the finance industry. Our job is to lend money, takes deposit. So we are also commercial organization. We want to grow our business as well. So if you will grow, definitely we will grow. So it would be a kind of win-win situation if we share our thoughts. So first I will go through what all products are. I am not going into detail because that takes maybe a hour's time to explain you, or maybe you will not be able to much get out of the discussion. But I will give you a brief about the products, which core products or main products which we have, which may help you and your relatives or your colleagues or your kind of association, through which you can spread across our products, discuss with them. If you require it, connect to your branch. If your friends require it for business purpose, then you can connect to your nearest branch. So see, we are as he said, Rishikesh is saying that we are also doing business basis on government schemes. We have Mudra loan, which normally branch is doing it, you are getting benefit of it. There are CGT MSC cover also, where you are kind of getting government support to secure fund which we are lending to you, because we are lenders. So we definitely want that our deposits, which is your money only, that can be secured. So for going, securing depositors fund, we are definitely see that how their funds would be secured. Correct? So basis on that only, the government are coming with the different schemes. They are providing kind of collateral support in form of CGT MSC to micro and small units, so that you can also run business without collateral. We can also be secure that our fund is secure. If something went wrong, then definitely it would be kind of secure that fund we are giving to customers. So we are in Bangalore. I said that there are 293 branches we have, and most of the branches are rural and semi-urban areas. So that our reach should be to maximum customer, maximum geography, maximum locality to serve micro and small units. So what I am going to tell you about what kind of all major products which we are dealing in. So that is first is working capital and term loan, which normally requires for your stock and customers which you are giving on credit. Basis on the assessment of your stock levels and the outstanding of your customers, we are making assessment, and basis on that we are giving you funding. So we can give you a kind of brief example that if your turnover is 100, projected turnover of current year, so we can give you 25 rupees out of 100 rupees of your turnover. So if it is 1 crore, so 25 lakh rupees you can get it. That is basis on collateral as well as under CGTMSC. Why CGTMSC and collateral are telling you that collateral gives you a more benefit. If you have a collateral, then definitely the rate concession which you get is more than in case of CGTMSC, because in CGTMSC, what Rishikesh was saying that you have to also pay 1.5%
premium to government to secure the funds. So if you provide some collateral, that 1.5%, 1.25% depending upon the loan amount that you can save, and also bank will also provide you extra concession on it. So these are the collateral or CGTMSE we are providing funding to our micro and small units. So it is not like that if only collateral based funding is done under this scheme. We are also giving funding under CGTMSE also. So this is working capital where you require for your business for day-to-day operation. See, working capital is why required, because if you want to increase your stock, suppose you have one office and one shop, if you want to put an additional shop in nearby area or maybe some different place, so in that case you require some support to increase your stock. So if everybody would have a limited kind of fund, so in that case if you have certain plans, you come to branch, your nearest branch, discuss with your BM. They can support you for giving you funding for your kind of opening a new shop. Maybe if you want to increase your stock in your existing business, that time also they can support you. Sometimes you have to also go for credit to your customer, like 50 days, 20 days, 30 days. Maybe you are providing some, if you are into trading or wholesale business, you are giving to some nearby industries like small components or something of trading if you are into. So in that case also, for giving credit to them, we can support you to some extent. Like that's why I am saying that overall what debtors stock you have and how much your fund will be into the business, basis on that we can give you, make the assessment and give you funding on it. So this is working capital. At term loan we are giving you, like if you want to open some stores, so renovation of that. If you require some kind of machine you want to put, like CNC machine you want to put, so for machine loan that term loan can be required. If you want to construct some kind of industries where for construction and development of those industries require some term loan kind of fund, which we are giving 7 years, 8 years, maximum up to 20 years. So through term loan also we can give you benefit, and you can avail it and grow your business. So this is one product. Important point is that when you come for a bank, come to any bank for funding, bank definitely see that how much fund you are putting in by yourself, correct? So अगर आप बैंक के पास आओगे तो बैंक यही बात करेगी कि आप अपना कितना पैसा डालते हो, करेक्ट? आप अपना कितना पैसा डाल रहे हो फॉर बिजनेस, बिकॉज इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन, तो एटलीस्ट आपको अपना भी कुछ फंड तो रिस्क पे रखना पड़ेगा. बैंक में सपोर्ट डेफिनेटली, बट एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 100 रुपीज की आप कोई शुरुआत कर रहे हो या लाख रुपए का आप बिजनेस कर रहे हो, सो एटलीस्ट 25,000 रुपये तो आपका हो सकता है, 75 रुपीज बैंक ले सकते हैं. सो दैट वे कैलकुलेशन इज डन. So margin, there is always be margin, that is 25 to 30% we are asking that customer needs to put in that business. Balance we can support for that working capital or term loan. So this is working capital which is plain, which can be availed by anybody. For traders we have a separate product which is suits for traders only, that where we are funding to trading units, और वहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो ट्रेडिंग यूनिट्स की आपका सेम होती है कि आपका इस साल का, जैसे ये साल 25-26 चल रहा, 25-26 फाइनेंशियल ईयर, जो प्रोजेक्शन आपका इस साल का होगा, बेसिस ऑन दैट वी कैन गिव यू 20-25% बेसिस ऑन द टर्नओवर. वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वर्किंग कैपिटल लिमिट, सीसी लिमिट जिसको बोलते हैं, सीसी लिमिट में आपको मंथली स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि आप इतना स्टॉक, इतना डेटर मेंटेन कर रहे हो. अगर आप ओडी पे जाते हो तो साल में आपको सिर्फ एक ही स्टॉक स्टेटमेंट देना होगा, बस. उसके बाद आप अपना लिमिट इंजॉय करो. सारे ट्रांजेक्शन अगर आप हमारे से लिमिट ले रहे हो, सो यू कैन डू ऑल योर बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू द बैंक, सो दैट वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आवर मनी इज सेफ, बिकॉज person to whom we are supporting as a financer,
So all the transactions, banking transactions, all the business transaction is routing through us. So this is Baroda OD limit is there, which we call Baroda Property Right, correct? Through which we are giving funding to trading units only, specific for traders. Apart from this, we have a Baroda Premium Lab, which he was talking about. Lab is something which we are giving to businessmen under MSME. Individual level पे आप जाके प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो, बट उसमें क्या है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इनकम टैक्स का। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के नाम पे लेते हो तो जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे कर रहे हो वो आप अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हो। तो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप इंडिविजुअल लोन लेने से अच्छा है कि आप अपने बिजनेस के नाम पे लोन लो, सो दैट कि इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो आप अपने बैलेंस शीट में दिखा के प्रॉफिट में आपको बेनिफिट मिल सकता है। इंडिविजुअल में लैब में बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा ये क्योंकि ये लैब है और एमएसएमई के लिए है तो इसका एंड यूज आपके बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक प्रॉपर्टी पे मैं लैब लेके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदूं, सो ये एमएसएमई में नहीं आता है। उस केस में आप इंडिविजुअल पे लोन लीजिए और आप अपने इंडिविजुअल आइडिया में उस प्रॉपर्टी को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इफ यू आर टेकिंग इट ऑन एमएसएमई प्रोडक्ट प्रोग्राम, दैट अमाउंट शुड बी यूज्ड इन योर बिजनेस, मे बी फॉर purchase of machinery, for creating stocks. Why this is different from other two products? Because there we only take you certificate that this amount is going to be utilized for a business, and we will monitor it through your banking transaction. But in that case, you don't need to give us any kind of stock statement monthly or yearly, which was there in earlier two products which we discussed. In lab, we are giving loan up to 10 years, which may extend to 12 years. So minimum loan which we are giving in MSME start from 25 lakhs to 200-300 crores. There is no upper limit. But if you are coming into less than 20-25 lakhs, there are Mudra schemes which Kishore, Tarun kind of products. We have Shishu. So where we are extending up to 20 lakhs. Correct? So that scheme is always be there, which all branches are doing it actively. So these are three products which is required for MSME, and normally MSME trading or service or manufacturing unit are taking those kind of facility from banks. Apart from this, there are contractor schemes also. So this why this is scheme? Because we have designed our products to suit all kind of customers, so that we can cater all business class. So this contractor scheme is actually, if you see that Karnataka is growing, that is most prominent states for the country. And if you see that always be there are developments in surroundings, maybe for industrial development, PWD, road construction, bridge construction. So this scheme has been designed for the contractors, those who are taking contracts on behalf of Government of India, state government, other government departments like PWD or other like hospitals. For they are constructing a hospital and all, they are taking contract for public benefits. So for that we have designed this scheme for contractors, where we are giving funding to contractors up to 25 crores. And this is divided into two parts, that we are giving for working capital also, because in form of OD, because you have to maintain your stock, you have to pay to your employees, you have to procure your materials. Apart from this, you also require a BG limit, bank guarantee limit, because if you go for any bidding, you have to submit first what BG to the government at the time of bidding to mobilize to get your contract, to award this contract to you. And if you want to kind of advance, if you want to take from any of your customers, then you have to give, sometimes you have to give BG to them. For
mobilization of your fund, so that कि आप PG दें उनको मान लो 10 लाख रुपए की for 3 months, they can give you 10 lakh रुपए का advance, so that they can also secure आप small enterprises हो, whether advance should not be kind of वो आप डूब नहीं जाए, that way you can, they are asking for BG. So advance mobilization also you require BG limit. Apart from this, if you are going for any contract, there is a life of it. You have to give guarantee as per the contract that if you are constructing the road, that should not be kind of damaged, or should not be flood out, or something could not be happen for next 4-5 years. Because आप अपना घर बना रहे हो, so you are expecting कि 25-30 साल तो चलेगा मेरा ये, करेक्ट? वैसे ही आप अगर गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, so if you are constructing any road, there is a life of it, that may be 5 years, maybe 7 years as per the contract, and आपको उसके अंदर मेंटेनेंस भी करना होता है for certain period, 2 years, 3 years kind of. So वहाँ पे वो आपसे BG मांगते हैं as a guarantee that whatever you constructed road or bridge or hospitals or school, that should be there as per the contract term. If it is you are defaulting or you are putting some wrong materials, if it is getting kind of destruction happen, then they can claim that amount through BG. वो BG बैंक इशू करती है so that कि आपका बिजनेस चले, और डिपार्टमेंट इसलिए मांगती है कि कल को प्रॉब्लम हुई तो वो BG बैंक से क्लेम करके और पैसा बैंक से दे सकते हैं. So under contractor scheme, we are giving OD for your working capital needs, day-to-day operation, and BG also we are giving LC to procure the materials. Suppose for construction of any building, you need to procure bricks, cements, rods. So for that, maybe your supplier asks कि boss मेरे को advance पैसा चाहिए. So you may not be able to give advance, but there is a letter of credit which gives guarantee by the bank. This customer will not be default if you give material to them. So basis on LC you can procure material where you can save your fund, because it is only kind of instruments which bank is giving on behalf of you that your material or your work is saved. So going into that, LC we are also providing where we don't require any, because if you don't require to pay anything to them, you can give 90 days, they can give you credit basis on RS. You can negotiate with them कि I want credit, मेरे को उधार चाहिए, लेकिन मैं आपको LC की गारंटी बैंक से दिलवा रहा हूँ कि आपको 90 डेज में पैसा मिल जाएगा. For that also, if you are giving advance to them, then there is a interest cost into it. But अगर 90 डेज का दे रहे हो आप 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए 90 डेज का इंटरेस्ट होता है. बट आप अगर LC दे रहे हो तो LC में कमीशन 1.5-2% का होता है ईयरली. तो 90 डेज के लिए आपको क्या कमीशन देना पड़ेगा? 0.5-0.4%. और उसके लिए आपका पैसा आपके पास रहेगा फॉर अदर बिजनेस. सो वी आर गिविंग LC, BG एंड वर्किंग कैपिटल ऑल्सो. अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कोई व्हीकल चाहिए, CB, CME, उसके लिए हमारे पास सेपरेट स्कीम है. वी कॉल दिस एज ए CME, कमर्शियल इक्विपमेंट, एंड CB, commercial vehicle. Vehicle is like truck, motors, etc. is coming in CB, commercial vehicle. That we are giving to all such kind of contractors. If you are running schools, then school में भी आपको बस करता है to transport your employees and students. अगर contract में हो आप, या mining में हो, या माइनिंग में आप अगर CME प्रोवाइड करा रहे हो, कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल इक्विपमेंट्स लाइक अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हो गया, लोडर हो गया, लिफ्ट हो गई, जहाँ से आप मटेरियल आप लिफ्ट करते हो, उसके लिए वी हैव अ स्कीम वेयर वी आर गिविंग टू दोस कमर्शियल व्हीकल एंड CB CME स्कीम अंडर दिस स्कीम वेयर वी आर गिविंग एट वेरी फाइन प्राइस इनटू इट. और जो भी उस CB और CME के कॉस्ट होंगे वी आर प्रोवाइडिंग 5 to 90% funding we are giving. So suppose if vehicle is coming of 10 lakh rupees, we can fund you 9 lakh, 85 lakh, 9 lakh. It is coming kind of 1 crore rupees. If it is coming 10 lakh, so 9 lakh
8.5 lakhs we are giving for such kind of business. Where rate of interest is also very competitive. We are giving around 8.5, 8.65. Yes, all the rate and processing fee which always be depend upon your balance sheet, financial credentials and your civil rating. There should not be any default history of yours. Your repayment is always be clear, like आप 2-व्हीलर लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, कोई भी तरह का लोन, हाउसिंग लोन आपका चल रहा है, तो हम उसको देखते हैं कि कस्टमर के सारे रिपेमेंट्स ठीक हैं, तो हमारा पैसा सेफ है। सो अगर हमारा पैसा सेफ है तो हमारा रेट डेफिनेटली थोड़ा कम होगा, बिकॉज हमारी आपकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी सिस्टम में बनी हुई है, इकोसिस्टम में। और अगर लगा कि हाँ थोड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम इश्यूज है, तो सीधा सीधा होता है मोर रिस्क मोर रिवार्ड। सो इफ यू आर टेकिंग रिस्क मोर, देन वी विल डेफिनेटली आस्क higher rate of interest. So all rate and processing fee concession is given basis on your balance sheet, how your business is from last 2-3 years, because there should be a kind of vintage into the business. Because for startups we have separate scheme. For existing businessman we definitely ask कि 2 साल की balance sheet दो आप बैंकिंग 6 महीने की दो, हम आपका KYC से सिबिल निकालते हैं, basis on all these documents we do assessment and accordingly we will facilitate you financial support you for your business. So this is called CVCME product which we have. Apart from this we have specialized scheme for doctors, we have specialized scheme for school, colleges, engineering colleges, like if you anybody who are posing any medical science certificate like MBBS, MD, कोई भी certificate, or if they want to go for a hospital or buy some clinic or maybe some equipment for the hospital or clinic, we have a product program for that, where we are giving term loan for 5 years, 7 years for kind of constructing of hospital, buying ready-made clinic, buying equipments, operation theaters, consumables, stock. For that we have a scheme where we are giving funding up to 30 crores under this scheme, start from 25 lakhs to 30 crores. Similarly, we have a scheme of Vidyasthali, that for doctors, hospital, clinic, we call it as a Arogya Dham, Baroda Arogya Dham. For school, colleges, we have a scheme of Vidyasthali, Baroda Vidyasthali, where we are giving funding to school, colleges for construction of term loan. We are giving for construction of schools, colleges, for other fixed assets like computer, lab, other furniture, fixture. For that we are giving term loan for schools that has been designed to suit your business. So if anybody in your relation or friends, those who are having such a school, even small school, we are funding. So it is not that schools should be like a larger. Yes, collateral definitely in all schemes there are different kind of collateral where we require. Somewhere it is 50% of your total funding, somewhere it is 70%, somewhere it is 60%. So every product having been designed in such a way that suits, and these are unique products which suits for a different business. So we have, like I said, that Arogya Dham for doctors, clinic, hospitals, Vidyasthali for school, colleges, engineering colleges, medical colleges. Apart from this, we have also future rent receivable, we call it. So this future rent receivable means that is for the large customer in MSME, where we are giving, suppose you have given your factory or you have given your godown, you have given your commercial property to some kind of good customers, those who are running business, their business, and they are paying rent to you. So that lease is given for longer period, maybe 10 years. जैसे आप ये होटल है, हो सकता है किसी और ने कंस्ट्रक्ट किया हो और किसी और ने ये लीज पे 10 साल का लेके इस होटल को चला रहा। So basis on that, this owner of that hotel or this company is giving rent to somebody who is owning this property. So basis on this receivables, future receivables, because अगर किसी ने रेंट पे या लीज पे इस होटल को लिया हो
इसमें 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ खर्च किया हुआ, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्रोजेक्ट। सो ही इज नॉट गोइंग टू मूव आउट फ्रॉम दिस बिल्डिंग इन 2 years 3 years, बिकॉज कल कोई होटल चले लैंड और बोले कि आप निकल जाओ। सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि somebody is putting that much of money and landlord is saying after 2 years कि you will get my property. So that is going on the long lease, like 8 years, 10 years, 15 years लीज होता है, जहाँ लॉकिंग भी होता है कि 5 साल में खाली नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते। बेसिस ऑन दैट फ्यूचर रेंट विच यू आर सपोज टू गेट इन, उसके बेसिस पे हम इसका असेसमेंट करके और आपको फंडिंग करते हैं 10 साल 12 साल में। तो अगर आपका मान लो महीने का 50 लाख रुपए का अगर रेंटल आ रहा और एक बड़ी प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, तो उसके बेस पे असेसमेंट होती है जहाँ पे हम आपको 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक फंडिंग कर सकते हैं। तो बट MSME के अंदर वी हैव रिटेल प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर दिस, जहाँ पे हम 100 करोड़ के नीचे की फंडिंग रिटेल के थ्रू करते हैं और 100 करोड़ से ऊपर की फंडिंग जो होती है वो हम इसके थ्रू करते हैं। सो इफ यू आर इनटू द बिजनेस वेयर यू आर प्रोवाइडिंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर सर्विस टू somebody who is constructing a building or factory or godown, you can talk to them if they require any support, such kind of support. You share our numbers, branch managers number to them, and we can support those units or under this FRR, future rent receiver, lease rental discount जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन फेज में भी है तो हम उसको टर्म लोन देते हैं। मान लो एक बड़ा गोडाउन 1 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्ट कर रहा, उसके लिए उसको 50 करोड़ रुपए चाहिए या 40 करोड़ चाहिए, 40 करोड़, 50 करोड़ चाहिए, तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी गोडाउन के लिए पैसे उतना देते हैं। बाद में जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है और किसी बड़ी कंपनी को वो लीज पे देते हैं, तो उस लोन को हम कन्वर्ट कर देते हैं लीज रेंटल में, सो दैट कि उसका रिपेमेंट चलता है। और इसके लिए हम मोरेटोरियम भी देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए कि आज हमने लोन लिया आपसे तो 12 महीने कंस्ट्रक्शन को लगेगा, तो 12 महीने हम उसको रिपेमेंट की जरूरत नहीं है, ओनली इंटरेस्ट पे करना है। सो दिस इज फ्यूचर रेंट रिसीवेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मोर गिविंग मोर फोकस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो आपकी वाइफ के नाम पे हो, आपके डॉटर के नाम पे हो, आइदर वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो। जिसमें पार्टनरशिप हो तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनका एटलीस्ट शेयर 50% से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पार्टनरशिप। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप, वहाँ पे बेनिफिट ये हम दे रहे हैं उनको, बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम 5 करोड़ की फंडिंग कर रहे हैं। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका कोलेंट्रल है, फाइन कोलेंट्रल नहीं है, हम CGTMSE में कवर करते हैं, या कोलेंट्रल और CGTMSE मिक्स करके भी हम 7.5 करोड़ की फंडिंग करते हैं। वहाँ पे जो रेट है वो हमारे जो बेंचमार्क रेट है हम वहाँ तक भी जाते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली हम 8.15, 8.25 देते हैं। रीजन इसका है टू इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो अगर आप अपने नाम पे बिजनेस कर रहे हो और अपनी वाइफ के नाम पे कर रहे हो, बिजनेस आप रन करो या आपकी वाइफ या डॉटर या आपकी मदर, कोई भी अगर उस ऑनरशिप में है, तो आपको रेट बेनिफिट मिलेगा उसमें अच्छा एज कम्पेयर टू अदर। बिकॉज रीजन क्या है कि अगर आप MSME पूरा देखोगे एज इंडिया, 80% MSME 6.4 करोड़ MSME यूनिट्स एज आई सेड, 80% यूनिट्स इज रन बाय मेल and 20% is run by women. So there is a disparity into it. So government wants कि जो लेडीज हैं वो इस बिजनेस में आए और वो भी क्या करें, इकोनॉमी को सपोर्ट करें टू ग्रो। टू ग्रोइंग दैट वी आर गिविंग सच सपोर्ट्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। सो वी हैव डिजाइन्ड आवर लेंडिंग प्रोडक्ट टू सूट्स लेडीज एंटरप्रेन्योर्स, दैट मे बी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। हाँ, ये है कि उनकी अपर लिमिट जो है एज की शुड नॉट बी एक्सीड 65 इयर्स। तो आप महिला स्वावलंबन स्कीम विच वी कॉल, दैट इज डिजाइन्ड फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव न्यू लॉन्च स्कीम। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है सोलार के ऊपर। आप अपने रूफ टॉप पे रखिए
आप अपने ऑफिस में लगाएं, सो दैट कि आप अपनी बिजली खुद जनरेट कर सकें। सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सच सपोर्ट्स, वी आर गिविंग फंडिंग टू सोलार ट्रेडिंग यूनिट्स, दोज हु आर ट्रेडिंग द सोलार पैनल्स, जो आप अपने हाउस पे भी लगा सकते हो। जैसे आप समझो सुकैम है, लुमिनस है, सो लुमिनस का सोलार आता है जो आप अपने घर के रूफटॉप पे लगा सकते हो, फ्लैट पे लगा सकते हो, जनरेट योर ओन एनर्जी फॉर योर ओन कंजम्पशन। तो वहाँ पे आप जाओगे तो उनके ट्रेडर्स के पास जाओगे, कंपनी से तो खरीद नहीं सकते। तो ये जो डिजाइन किया गया है वो उन ट्रेडर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, सो दैट दे कैन सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, मे बी फॉर कमर्शियल कंजम्पशन और मे बी फॉर इंडिविजुअल यूज। उन ट्रेडर्स को स्कीम हमने सोलार के अंदर हम लेके आए हैं जहाँ पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके अंदर हमने एक और स्कीम लाई है वो यंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, जिसका एज 35 से नीचे हो। अगर वो इस यूनिट्स को रन कर रहा है तो हम वहाँ पे भी उसको काफ़ी फाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट से देते हैं, विच गोज में भी 8.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट तक हम जाते हैं उस यूनिट्स को, उस ट्रेडिंग यूनिट सोलार यूनिट्स को हम देते हैं। सो these are the product scheme which we want to share you. Idea is to invite you people for this kind of arrangement where we are reaching all talukas, all district level, kind of association, industrial association. In coming, maybe in this month, we are arranging more than 15 such outreach program where we can reach to customer, convey our products, and we share our thoughts, what MSME is all about, and how we can support you. Basis on that, you can get some benefit, or you can spread Bank of Baroda all such products. There are multiple products. So the product which I have discussed with you, these 14-15 products, which you can spread across in your society, so that others can also get benefited, those who have not joined us. So आज हम 50-40 लोग बैठे हैं, 40 से 400 भी कम्युनिकेशन अगर चला जाता है, हर लोग आप लोग अगर कम्युनिकेट करते हैं तो सोसाइटी कैन गेट बेनिफिट, एंड along with society we as a bank can also grow. So thank you all, and recently supporting Bank of Baroda from last 118 years, and we will expect some good business through this program, and more importantly awareness among the society. Thank you so much. बेंगलोर में ऑफिस में काम करता हूँ एज ए MSME हेड। तो यहाँ का हमारा जितने भी एरिया है, कोलार है, मुलबागल है, देन जीरा है, और उसके बाद में ये साइड में जाएंगे तो अपना चिकबल्लापुर है, डोरबल्लापुर, दैट कम्स अंडर आवर एरिया ओनली। तो यहाँ पे जितने भी MSME के लोन है हम यहाँ से बेंगलोर में ऑफिस से सैंक्शन करते हैं, जो 1 करोड़ के ऊपर वाले होते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं ब्रांच लेवल पे सैंक्शन किए जाते हैं। तो हमारे MSME के प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो आपको सर बाद में बता ही देंगे। तो जैसे सर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वी हैव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर्स एज पर देयर बिजनेस एक्टिविटी। जैसे आपको इसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, देयर इज सेपरेट टीम फॉर CTCM फॉर द ट्रांसपोर्टर्स, इवन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट आल्सो सेपरेट स्कीम। इसका कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए सेपरेट स्कीम है। अगर किसी को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेना है, फॉर दैट आल्सो वी आर हैविंग सेपरेट स्कीम नेम बरोडा प्रॉपर्टी प्राइवेट। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट MSME के प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम कस्टमर को MSME कस्टमर को लोन देते हैं। और जैसे उसमें MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ज़्यादातर जो रूरल एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर हमको पाया जाता है कि माइक्रो एंड स्मॉल कस्टमर ही जहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल पंप के लिए हमारे सेपरेट स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग सप्लाई चेन फाइनेंस टू द पेट्रोल पंप डीलर्स, जैसे इंडियन ऑयल है, HPCL है, नायरा है, BPCL है, GOBP। We are having direct arrangement with these companies also for providing supply chain finance to the dealers at low rate of interest. तो हमारा जो rate of interest is for special for this scheme comes to start with 8.25% to 8.85%. It depends on the collateral which you are offered by the customer. If customer don't have collateral, then it covered under CDMC scheme also. For that, customer has to pay 1% as a guarantee fee every year to the central government. And each year that premium amount is differ
on the basis of the decided by the government only. और यहाँ पे जितने भी MSME कस्टमर्स हैं जिसका रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार सर को लिस्ट दे दीजिए, then we can talk one by one. ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಮುಳಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಡೀತದೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾರ್ ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜೇಶ್ ಸಿನ್ಸ್ 2-3 years ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಬೇಕು, ಓಡಿ ಬೇಕಾ, ಸಿಸಿ ಬೇಕಾ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು MSME ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸದುವಿನಿಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಮ್ಮದು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮದು ಹೂಕೊಂಡೇವೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ವೈಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟೇ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ. सर आपके लिए जो मैंने एक प्रोडक्ट बताया, if you can just explain that Baroda branch manager Oh, will wait, definitely support you for your business. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 4-5 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀಸನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಜೋನಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ